मैं जब छोटा था तो मेरी दादी मुल्तानी मिट्टी जो अपने चेहरे पे लगाती थी, मैं उसको सीधा सीधा खा जाता था। चॉक, पेंट, मिट्टी, आइस एंड एवरीथिंग नाइस, ये सब मैं खा लेता था और मुझे पता ही नहीं था कि ये सब आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के साइंस हैं। अब मैं तो फिर भी ठीक हो गया क्योंकि टाइम पे बचा लिया मुझे, लेकिन दीज थिंग्स आर वन ऑफ द मोस्ट इग्नोर्ड, सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किए जाने वाली चीज़ें हैं बच्चों के अंदर। सो वेलकम टू सेहत पे चर्चा बाय सिप्ला, जहाँ पर वी टॉक अबाउट एवरीथिंग रिलेटेड टू हेल्थ। आई एम चंदन आनंद एंड मेरे साथ आज दो ऐसे एक्सपर्ट हैं जो हमारे को आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया से रिलेटेड सारी जानकारी देने वाले हैं। सो वेलकम डॉक्टर रुशिद शाह, डॉक्टर शैलेश गुप्ता, वेलकम टू द शो। एंड प्लीज़ फर्स्ट आप लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। Hi, I'm Dr. Rushid Shah. I am a practicing pediatrician since last 5 years, and my special interest is this nutrition, especially. So, I'm at the right place, I guess. I'm Dr. Shailesh Gupta. I've been practicing for a very long time, 36 years almost. And, I have a special interest like Rushik in child nutrition and child feeding and so on. Anemia is of special interest to me. So sir, because both of you have this special interest, Yes. please help me understand what exactly is iron deficiency anemia? So iron deficiency, हमारा जो blood है उसमें red blood cells होते हैं, and these red blood cells carry oxygen to all parts of the body. और वो oxygen carrying जो होता है वो red blood cells में hemoglobin करके एक pigment है that carries oxygen. और hemoglobin का एक most important part है iron, heme. तो जब हमारी बॉडी में आयरन कम होता है तो हमारी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, विच इज शोन इन इन्वेस्टिगेशंस एज लो हीमोग्लोबिन। तो उसका पूरी बॉडी पर इफेक्ट होता है, राइट फ्रॉम द ब्रेन टू योर मसल्स टू योर हार्ट एंड एवरीथिंग, योर डेवलपमेंट, योर बिहेवियर। तो इसी को हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बोलते हैं तब जब हमारी बॉडी में आयरन कम है। सो देयर आर वेरियस रीजंस कि आयरन कम क्यों होता है हमारी बॉडी में, एंड विच आई थिंक रुशिक कैन टेल यू अबाउट देम। So, as Sir said, anemia or iron deficiency anemia is low hemoglobin content. चौड़ा चौड़ा जो बोल सकते हैं लेमैन, मोटा माटी, हाँ ठीक है। मोटा माटी बोल सकते हैं। अब उसका देर आर टू आस्पेक्ट। फर्स्टली तो वुमेन एंड चिल्ड्रन स्पेशली, दिस इज द कैच ग्रुप विच इज मोस्ट अफेक्टेड। बोलते हैं ना वल्नरेबल पॉपुलेशन, women and children, especially childbearing age group women and children, they are the most affected and of course most ignored because बच्चा बता नहीं सकता क्या हो रहा है। उसके अलावा why in children, so we have to look at it from pregnancy to the child being born and first 1000 days of life. So pregnancy में placenta जो बच्चादानी बोलते हैं, that does the work of transferring iron to the baby till the baby is in mother's womb. उसके बाद initially जब बच्चा पैदा होता है, if I may know, do you know what is the normal hemoglobin level of a newborn child? सर मतलब डू यू नो? 14 से 16 होगा। Yeah, So you will be surprised to know that it's not 14 से 16, that is our hemoglobin level. The normal hemoglobin level in children is around 19 to 21, depending on the first day of life, that is. Okay. Depending on how much blood was, how much low hemoglobin was there in the mother, or how much high it was, how well nourished or badly nourished the mother was during pregnancy, and so on and so forth. And then gradually it comes down by around 3rd month of life, or when बच्चा 3 महीने का हो जाता है, तब the hemoglobin level falls down to 16 to 14 or so on, and then gradually it goes down. So especially these first 1000 days of life are very important, where most of us miss out on this diagnosing iron deficiency anemia in children. But sir, when you say that initially when a child is born, they have an iron level of 19 to 21, the hemoglobin is that high. Why does that come down? Or what causes the iron deficiency in women or in children or men, whoever? So, there's a medical reason for that. The RBCs that are in a newborn, they begin to disintegrate. वो टूट जाते हैं for first 3 months of life. They do not generate new RBCs from their marrow. तो इसलिए वो जो टूट जाते हैं तो वो हीमोग्लोबिन के साथ आयरन भी लॉस हो जाता है। व्हाट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस हियर टू अंडरस्टैंड इसके आयरन डेफिशिएंसी होती क्यों है। तो उसके 3 कारण है बेसिकली। या तो आप आयरन कम ले रहे हैं, योर इनटेक इज लेस। सेकेंड इज वट एवर आयरन यूर टेकिंग वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है आपकी बॉडी में। और तीसरा है कि यू आर लूजिंग आयरन समवेयर,
You know, so women have these have blood loss during periods, menstrual cycle में वो loss हो जाता है. Children when they are growing, you know, the early preschool period when they rapidly grow, उनकी iron requirement ज़्यादा होती है. आप उतना उन्हें supplement नहीं करेंगे तो वो anemic हो जाते हैं. Plus adolescents, वो spurt होता है 10-12 years of age, they put on weight, they put on height, they need more iron. वो आप नहीं दे पाते हो तो फिर उन्हें anemia हो जाता है. और अगर आप कम ले रहे हो, आपका न्यूट्रिशन कम है, आई सी अ लॉट ऑफ वेयर आई प्रैक्टिस, देयर इज अ स्लम, दिस अ फेमस स्लम क्लोज बाय, तो वहाँ से जो बच्चे आते हैं ऑलमोस्ट आई वुड से 99% हैव आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, बिकॉज वो उनके पेरेंट्स उनको उस तरह का अच्छा खाना दे ही नहीं पाते हैं जिसमें आयरन मिले. सो इट्स वेरी ईजी फॉर मी टू यू नो लुक एट देम एंड से कि भाई इसको एनीमिया है एंड आई नीड टू स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग एंड ट्रीटिंग. सो ये 3 कारण होते हैं. तो व्हेन वी आर इन्वेस्टिगेटिंग अनीमिया वी नीड टू लुक एट ऑल ऑफ दीज के इसको या तो कम आयरन मिल रहा है या कहीं से इसका लॉस हो रहा है या एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है. सो once you come to a conclusion by clinical examination and by investigation, then we go in for the treatment. But you also said that there may be a case of body absorption issue, that iron is not getting absorbed in the body. What is that condition? 2 major conditions that are very prevalent in our country. One is worm manifestations. The most common, no need to sensitize people. सबको पता है, सब भाषा में अगर आप पूछोगे, सब भाषा में सबको पता रहता है डीवॉर्मिंग क्या होता है. क्या होता है? डीवॉर्मिंग, अच्छा डीवॉर्मिंग बेसिकली आपका नहीं हुआ. अच्छा आपका नहीं हुआ, अभी कर देंगे कोई नहीं सर. It's not how bad it sounds. So worms are basically बोलते हैं ना पेट के कीड़े. हाँ, सुना वो होगा. ठीक है. एग्जैक्टली. सो दैट्स व्हाई आई सेड इट्स नॉट दैट एज बैड एज इट साउंड्स. सो पेट के कीड़े क्यों होते हैं? इट्स मोर बिकॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन. इट्स अ साइकिल. माल न्यूट्रिशन कॉजेज वर्म इन्फेस्टेशन कॉजेज अनेमिया वर्सन्स वर्म इन्फेस्टेशन एंड ब्लड लॉस. Okay. सो डिवॉर्मिंग करना बहुत ज़रूरी है. दैट इज़ वन थिंग विच इज़ मिस्ड. इट्स द मोस्ट इकोनॉमिकल वे ऑफ प्रिवेंटिंग आयरन डेफिशिएंसी अनेमिया इन आवर सेटअप. नहीं तो आप कह रहे हो कि पेट में कीड़े होना ज़रूरी है? नहीं, पेट में जो कीड़े हैं उनको मारना ज़रूरी है टू प्रिवेंट आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया. Deworming का मतलब worms को निकालना. Worms को निकालना with medicines. Yeah. अच्छा, Deworming. sir, there was also one thing that you said that when you're practicing, आप देख के बता पाते हो कि किस में आयरन डेफिशिएंसी है, किस में नहीं है. What are those visible symptoms? Okay. So even before a patient comes to us, हमारे examination के लिए, if a parent may notice कि मेरा बच्चा थोड़ा हर काम में slow हो रहा है, you know, सुबह उठने में देर करता है, स्कूल जाने में थोड़ा लेजीनेस करता है, ग्रेड्स गिर रहे हैं, not looking very energetic. So these are all indicators that he could be or she could be having anemia. The child looks pale, जो normal pink complexion होना चाहिए बच्चे का वो नहीं होता है, you know, and when they come to us we check their conjunctiva, we check their nails, we check their tongue. तो इनका जो color है वो normal pink होने के बदले it's sallow, it's you know whitish, yellowish. So it's very easy. If somebody walks in, you're not anemic, you probably have a hemoglobin of 16 maybe. But so I can actually look at someone and say इसका 8 है, इसका 9 है, इसका 10 है, इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद. Depending on the grade. But it's very apparent. एक मालूम पड़ जाएगा. Plus they may have other signs of malnutrition. जिसको nutritional anemia है, उसको global nutrition होता है, उसका vitamin D भी कम होता है, उसका calcium भी कम होता है. So when I see a child who is overall not looking good, the hair is brown, the complexion is sallow, the weight is less than what it should be. So all of this, we put it all together and we clinically diagnose anemia or iron deficiency. But sir, this seems more scary because अगर आप देख के ही बता पा रहे हो कि किसको अनीमिया है, and still it is one of the most ignored things. Yeah, you're right about that. The reason why it is ignored or it's missed, I would say, not ignored, we don't ignore it, we miss it. We miss diagnosing it. It's because it's so prevalent, it's so common. A lot of our children look pale and sallow, so it's not out of place. Okay, let's say we go to a more developed country, वहाँ ज़्यादा लोग are well fed, they are well nourished, उनका hemoglobin अच्छा है, all children look pink. उसमें से कोई एक आ जाए जो sallow दिखता है तो तुरंत पकड़ में आएगा. अब हमारे 10 में से 9 बच्चे ही वैसे हैं. So the parents also don't, unless you are very tuned to, you are intelligent enough to pick up these signs. वो चल रहा है, सब ठीक है. 70% बच्चों को अनीमिया है. एंड
again, not a great figure to boast about. It is sad. It is really sad that in a country like us, we are not resource limited in terms of these kind of conditions. Of course, there are certain things which are not treatable. It's okay. It's a very common condition. It's treatable and it's diagnosable. Still, we miss it. Women and children. And apart from the malnutrition, there is something called as malnutrition, is what is coming in last 20 years due to globalization. Burgers, French fries, cokes, coffees, teas. I mean, it's one, tea and coffee both are harmful in the sense that they prevent absorption of iron. अगर आप iron खा रहे हो, साथ में आप कॉफ़ी या चाय पी रहे हो, जितना आपने खाया आधे से ज़्यादा absorb नहीं होगा. तो आपने खाया, it affects the absorption. चाय के बदले आपके आयन के बदले आपकी चाय absorb हो जाएगी, digest हो जाएगी. अपना सारा machinery works to digest tea, coffee rather than the iron from the nutrition. Malnutrition again, processed food, bad for health, obesity बढ़ाता है, malnutrition करता है, and that's why the specific term malnutrition, because it's all available in the malls. That is one of the major reasons why we are in that 70% of our women and children are suffering from iron deficiency anemia, which is such a simple disease to take care of just by oral medicines. So, but if I go with this, then I think our complete lifestyle will have to change in order to ensure that we are able to combat something like an ID, and not just that कि हम लोग आने वाली जो हमारी generation है उनको ये सब problem ना हो. Well, I don't know lifestyle हम change कर पाएंगे कि नहीं, because as he says malls को गिराना पड़ेगा, which is not possible. But the thing is, we can create awareness. Tell our parents that home cooked food is much better, more nutritious than what you go and eat in a mall on very frequently. What he said. Couldn't agree more. उनमें nutritional value भी कम होता है, plus like he said, too much of tea and coffee. Tea में एक theophylline type का एक molecule होता है which prevents absorption of iron from the gut. So consumption of too many of these beverages also interferes with iron absorption. So, if I have to ask you that what are the things I can do to ensure that my iron levels they get increased, what would be those suggestions in terms of on a medical way and more on a So natural let's way begin with what he mentioned a little earlier, that it starts with the mother. You need to nourish a pregnant woman. तो आप एक प्रेग्नेंट लेडी का हीमोग्लोबिन चेक करें, कम है तो उसे आयन दें, सप्लीमेंट्स दें. एंड यू कैन नॉट रेज हीमोग्लोबिन लेवल्स ओनली बाय न्यूट्रिशन के उसको रोज हम पालक खिला रहे हैं और कोई नॉन वेजिटेरियन फूड खिला रहे हैं, उससे नहीं बढ़ेगा. यू नीड टू गिव देम आयन टैबलेट्स, and we normally start giving them around 7 months of pregnancy. 7 months of pregnancy. But and now because the awareness is there, some gynacs who are forward and those people who want to actually prevent anemia, we start from 3rd month itself or 4th month itself. Yeah. When we know, क्योंकि हमारी females सदियों से जो है चल रहा है, not हमारी females, all over the world in fact, it's low, hemoglobin is low because the demand is increased. Basic principle is demand supply का system है. बच्चा पेट में है, demand बढ़ने वाला है, you supplement. You supplement from 4th, 5th month of pregnancy to 6 months after delivery so that mother and baby both get. Why? It's a twofold this thing, that mother will benefit because उसका iron गिरेगा नहीं. Breast milk has some amount of iron transferred which has more bioavailability. अभी bioavailability meaning more of breast milk iron is absorbed than the cow's milk. अगर आप 1 लीटर cow's milk देखोगे, 1 लीटर mother's milk देखोगे, उसमें से जितना iron मिलेगा, the breast milk iron is more likely to get absorbed and more likely to have a higher iron in the baby's body than the cow's milk. That's why we say cow's milk is also in excess, not good for health. So taking ahead from what he said, you take care of the mother, then you take care of the newborn. Yeah. Okay, so we start iron supplementation for babies maybe around 3rd or 4th month of age, continue till a year of age. जब तक कि वो normal खाना नहीं शुरू कर दें. Because milk is overrated in India. दूध पिला रहे हैं, हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, but unfortunately milk is a very poor source of iron. दूधो खाओ, full of whatever that is. So वो दूध ही पिलाते रहते हैं जब 2-3 साल तक खाना खिलाना नहीं सिखाते हैं. Correct. So these children are anemic down to the level of having very low hemoglobin levels. और जब उनकी हीमोग्लोबिन लेवल्स लो होती हैं तो उनकी बॉडी में जो ऑक्सीजन सर्कुलेट हो रहा है वो भी कम होता है. देयर ब्रेन डेवलपमेंट इज ऑल्सो इज अफेक्टेड बाय दैट. उनकी लर्निंग एबिलिटीज़, उनकी रीजनिंग, उनकी सो देयर बिहेवियरल प्रॉब्लम्स ऑल्सो कम अप. You need to introduce
solid foods at 6 months of age and not delay it. Okay, दूध ही पिलाते रहो, ऐसा नहीं करें. And like he mentioned, cow's milk itself causes a problem. There is something called a milk protein allergy in human beings. So वो क्या करते हैं कि that causes iron to be excreted from our intestine. We lose iron. So children who are fed on animal milk for a very long time, they develop anemia. So you need to introduce food at the right time, you need to give iron supplements, or then you need to ensure that a child who's a year of age or older should be having a balanced meal of cereals, of grains, of legumes, green vegetables, fruits, citrus fruits, so the vitamin C also goes into their body, it helps in iron absorption. So if you ensure a balanced diet, तो उन्हें anemia नहीं होगा. But फिर then there will be periods of growth spurts, you know, the preschool period and adolescence, जब आपको उनकी hemoglobin level check करनी चाहिए. Maybe it's fallen down to 10 and we are looking at a 14 level. तो आप उन्हें वो 2 या 3 months के लिए iron supplements दीजिए. We have syrups available, we have tablets available. Like he said earlier, it's very easy to treat anemia once you diagnose it. But sir, again, I would like to ask, there's a two-part question to it. Yeah. One is that when you take supplements, there are some obvious side effects also, in the sense that you start to see your stool turning black. That is one. That happens in females who are pregnant at that point of time, but it becomes more scary for kids, you know, for infants, right? For parents, it is even more scarier, right? Because when it comes to the health of a child, you just freak out. So how do you deal with that? That is the first question. So the thing is, whenever, not me, not everyone who gives iron preparation to a small child, to a bigger child, to adolescent, to adults, to anybody in the world, whenever we give iron, whether oral form or injectable form, first thing we counsel is this, that the stools will be black from today itself. अच्छा ये बोल देते हैं. बोल देते हैं, and that is the most important thing. If you counsel well, rest of the problems are solved. So black stools, constipation or diarrhea depending on child's gut health or microbiomes, taste in the mouth, blackened tongue, blackened teeth, these are all temporary phenomena. We tell them that this will happen, but there is no need to worry. These are the excess iron that is going out of your body. Body को जितना चाहिए वो रख लेता है, बाकी सारा फेंक देता है. बॉडी एक समंदर है, एक्स्ट्रा कुछ चीज़ रखता नहीं अपने अंदर, सब फेंक देता है. उसको जितना ज़रूरत है उतना रखता है. That is one thing. Other thing is, if it is too severe, if it is too bothersome, if the child has become lethargic, dehydrated because of black stools and is passing loose motions, we tell them to stop it for a week. We restart it, we supplement with some probiotic. Probiotic is a good bacteria which help in digestion of the medicine. Once the body gets used to it, it will not happen. Can I add to that? Please. So it's not scary at all, as you said. Nothing to be scared of. Whatever iron we take, उसका सिर्फ 10% ही हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है. Even naturally what we take, बाकी it is excreted. That's, you know, there's a threshold. आप इतना लोगे उसमें से 10% एब्जॉर्ब होगा, इतना लोगे उसमें से भी 10% जाएगा. तो जो बाहर iron is basically a black colored atom molecule, so वो stool को black कर देता है. So like he said, we tell them पहले से ही कि थोड़ा black हो जाएगा for the period that the child is taking iron. Once you stop it, it goes. Some staining of the teeth also happens, but that can be taken care of by drinking water along with the medication and, you know, taking it in the back of the throat instead of in the front of the mouth. All of those little precautions that we tell them, but it's definitely not scary, and it's common, and it happens with most of the medications. So you see, they add color to children's medications. Yeah. Like vitamin और cough syrups में tartrazine होता है, तो उनका urine yellow हो जाता है. तो वो हमको पहले से बता देते हैं कि ऐसा होने वाला है for the period that you're taking medication. It's not so drastic. ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा problem नहीं होती है. Some may come with some abdominal pain sometimes. Like he said, you stop it for 3 days, they get back to normal, you restart with the lower dosage. But you don't stop the treatment. Yeah, so, and in the end we tell them that no effect is not good, side effect is better. So I tell my parents that side effect is better because your child needs to get better. If we don't do anything, he will land up in a hospital, we'll have to transfuse blood. If the hemoglobin. So I just a funny anecdote that I remembered because of this thing. I had a child, मैं बोला क्या हो रहा है? सर बाकी सब तो ठीक है, बच्चा थोड़ा तबीयत नहीं बन रहा है. मैं बोला ठीक है. और क्या हो रहा है? बोले नहीं सर सांस फूल रही है लेकिन बाकी सब ठीक है. बोला और क्या हो रहा है? बोले सर कुछ नहीं, पहले अच्छा खासा खेलता था, अभी खेलता नहीं, बाकी सब ठीक है. We did the CBC. Within half an hour the hemoglobin was 3.5.
3.5. Yeah, that is like half of the normal severity. So when there is hemoglobin of 7, Yeah. we tell them it's severe. The baby's hemoglobin was 3.5 and the baby was playful because baby को symptom नहीं आएगा. Most of the time baby is on the lap. तो अपने तरह बाहर खेलने नहीं जाते. If he had walked, they would have known, he would have collapsed. 3.5 hemoglobin में हम भी खड़े नहीं हो पाएंगे. So that is the kind of ignorance, or of course because they don't know what you don't see, you won't know. So उनको नहीं पता है कि इतना severe भी हो सकता है. तो ऐसा होता है. Okay. That's actually good to know. The second bit of the question that I was asking was, you talked about milk, that how a lot of things are related to milk. And that's why, I mean, while I was again researching on the net, I read that somehow vegans, they are not that prone to getting IDA. Is that like a fact? Because they've left all the dairy products and everything? I think the perception is that vegans may actually be more prone to develop IDA because they're not taking in iron sources like non-vegetarian food and milk and so on. But that's a myth again. So vegans eat fruits, they Right. eat green leafy vegetables, all of which provide iron. So if they're taking that in adequate quantities along with cereals, they should not have a problem if they're not anemic to begin with. But if there is a vegan who has anemia due to some other reason like poor absorption or loss, then you need to treat that. Same is myth with milk. The truth is that milk does not provide you enough iron. So ये एक balanced diet है, दूध पिला दिया बच्चे को आपने 2 लीटर दिन भर में तो he doesn't need to eat food is a very incorrect concept of nutrition, which I think we need to change for all parents. That you need to bring in all other vitamins, your A, D, C, all that comes from food and not from milk. So milk is good for an infant up to 6 months of age. Beyond that, he needs to start eating food. अच्छा सर, लाइक आई वाज आस्किंग कि जैसे मैं बचपन में मिट्टी खाता था या आइस की मुझे बहुत क्रेविंग होती थी, तो इज़ दैट अ कॉमन थिंग? क्या बच्चे बचपन में यही करते रहते हैं? एंड मतलब व्हाई डू दे डू दिस? सब बच्चे आपकी तरह नहीं होते बाय द वे, सब मिट्टी नहीं खाते बट काफ़ी सारे खाते हैं. सिर्फ मिट्टी नहीं, पत्थर भी खाते हैं. दे ईट chalk, they eat pencils, they eat rubbers, they eat paper. They scrape the paint off the walls and they eat all of that. So इसे हम medical terms में पाइका बोलते हैं, PICA, पाइका. पाइका. So इसका कारण है iron deficiency anemia. What happens is iron deficiency anemia में their body is craving for a mineral which is called iron. Okay, so they develop an abnormal taste. तो वो ऐसी चीज़ों के लिए surprisingly they don't develop a taste for the normal food that's being given, but they develop a normal taste for all of these things. So when mothers come and tell you doctor मिट्टी बहुत खाता है या जूत चप्पल चाटता है stuff, so we know this guy is having. अच्छा ऐसे भी आते हैं? Yes. चप्पल चाटने? Yes. और उसकी complications ये हो जाती हैं कि वो चप्पल चाटते हैं, उन्हें infection GI में होता है, they come with gastroenteritis, they come with worms that Rushak mentioned earlier. So उसकी complications ये सब होती हैं. A lot of worms are because of pica. तो बच्चे बाहर मिट्टी खाते हैं तो जो अंडे होते हैं कीड़ों के वो इस मिट्टी में होते हैं. So once they enter the child's mouth and intestine, they become full-grown worms. Yeah. That's how the cycle goes. Absolutely. So one more myth I would like to debust here is कि मीठा खाने से कीड़े नहीं होते हैं, अनहाइजीनिक कंडीशंस में जीने से कीड़े होते हैं. Okay? नहीं, मीठा खाने तो सिर्फ दांतों में कीड़े आते हैं दांतों ना? में लगते दांतों में हैं. वो भी कीड़ा नहीं होता है, कीड़ा कैरीज होता है, वहाँ कैरीज कीड़ा होता नहीं होता है कोई. सर Anyway. बचपन से जो हमारी रीत चली आ रही है वो तो कीड़े ही हैं. Right. So, But again- let me finish with that. So ये जो खाते हैं तो ये iron deficiency का reason. And as soon as we start them on iron, as soon as the hemoglobin level begins to rise, ये पाइका खत्म हो जाता है. बट अगेन यू नो कमिंग बैक टू द सेम टॉपिक कि जब बच्चे बड़े हो रहे हैं, हाउ डू यू ट्रैक कि उनको आइडिया है एंड उनकी क्या एक न्यूट्रिशनल डाइट होनी चाहिए? Right. सो व्हाट इज योर टेक? बताएंगे. So the thing is, how do you track? So it's the symptoms that we mentioned. Right. Easy fatigability, जल्दी थक जाना, not interested in activities, extra curricular activities, especially sports हो गया, athletics हो गया. अभी सारी schools में extra curricular होता है, उसमें interest नहीं दिखाना.
लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो बोलते हैं हम, एक जगह पे नहीं बैठ पाना, जल्दी चलते चलते जल्दी थक जाना, फीका दिखना, मतलब पेल दिखना, पिंक नहीं दिखना. These are the symptoms of childhood, especially child, and of course the pica is a major symptom. वो पता चल ही जाता है pica होगा तो we start immediately without wasting time on iron. अब आया बात ट्रीटमेंट का, तो ट्रीटमेंट इज़ वेरी सिंपल एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो. देर इज़ ओरल आयरन प्रिपरेशंस अवेलेबल. अब इसमें ओनली कैच इज़ a lot of parents, of course we are living in a fast paced world, digital world, we are doing digital, so सबको रिजल्ट जल्दी चाहिए, ओवरनाइट चाहिए. अनफॉर्चुनेटली मॉडर्न मेडिसिन डजंट वर्क लाइक दैट. यू हैव टू बी पेशेंट. ऑफ कोर्स यू विल सी रिजल्ट्स विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, बट इट्स नॉट लाइक दिस, इट्स नॉट मैजिक. So a patient has to be patient in modern medicine. Absolutely. So oral iron preparation start करने के 24 to 48 hours बाद you will see a drastic improvement in their alertness या consciousness level, जो भी बोलो, या जो concentration ability है. दूसरा, एक हफ्ते 10 दिन के अंदर, these are all approximate but these are all scientifically studied facts that 7 to 10 days के अंदर appetite returns to normal. उसके बाद जो इरिटेबिलिटी है, सबसे पहले इरिटेबिलिटी भागती है, उसके बाद एपेटाइट वापस आ जाती है. उसके बाद विद इन 4 days to 30 days इफ़ यू टेस्ट द हीमोग्लोबिन एविडेंस वाइज, बिकॉज वी आर इन अ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन वर्ल्ड, तो हीमोग्लोबिन चेक करेंगे तो वो बढ़ता है विद इन अ स्पैन ऑफ 1 month. दैट्स वाई द ट्रीटमेंट यूजुअली लास्ट फॉर 3 to 4 months बिकॉज वी हैव टू ट्रीट एंड देन मेंटेन. जैसे बताया कि ओनली डाइट और ओनली मेडिसिन इज नॉट गोइंग टू वर्क, इट हैज़ टू बी अ टीम गेम. ओके, मेडिसिन विल टेक केयर ऑफ द स्टोर्स एंड जो ऊपर से जो बोनस मिल रहा है दैट हैज़ टू बी अ बैलेंस डाइट. अबाउट डाइट, इट हैज़ टू बी, सी अपना इंडियन डाइट ना, हम लोग को लगता है अपने पुरखे बेवकूफ़ थे, मेजॉरिटी ऑफ लोगों को लगता है, इसलिए अब वी आर स्विचिंग टू मॉडर्न डाइट्स. स्टूपिड. आवर एंसेस्टर्स वर वेरी स्मार्ट. दे हैड अ मिक्स ऑफ पल्सेस, सीरियल्स, दाल चावल रोटी सब्जी एंड सैलड. इसमें मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स आर कवर्ड. एंड व्हेन दे हैड दिस थिंग, वो लोग कई बर्गर खाने नहीं जाते थे, वो लोग फल खाते थे. फल क्यों खाते थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विटामिन सी. आयरन के लिए जितना ज़रूरी आयरन मेडिसिन है, probably as much important is vitamin C, because vitamin C enhances the absorption of iron in your body. So if you take vitamin C along with these tablets or syrups or whatever, that increases your chances of getting recovery faster than only iron or only vitamin C or only diet, so to say. तो अगेन जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, अगर उनको आइडिया है, सो शुड दे गो आउट एंड एक्सरसाइज, should they go out and play? Is that something that is advisable or they should avoid that? No, of course they should. Of course, initially जैसे मैंने बताया जल्दी थक जाते हैं, but once that they are on treatment, of course they should do exercise, because exercise will in fact promote the production of RBCs, because थकोगे तब ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि भाई बनाना है, ज़रूरत है बॉडी को. प्लस वी आर सप्लीमेंटिंग, सो दैट हेल्प्स बोथ वेज. यू आर गेटिंग अ स्टिमुलस टू द ब्रेन कि भाई हीमोग्लोबिन की ज़्यादा ज़रूरत है, बढ़ाओ, तभी प्रोडक्शन बढ़ेगा. जब ज़रूरत ज़्यादा है, इट्स लाइक अ फैक्ट्री. इफ़ यू डोंट स्टिमुलेट इट विल नॉट. सो इट्स अ मिथ कि बच्चे एक्सरसाइज नहीं कर सकते. इफ़ दे आर सिवियरली अनेमिक, ऑफ कोर्स दैट आई विल नॉट से दैट अ हीमोग्लोबिन ऑफ 7 चाइल्ड शुड गो आउट एंड प्ले अ क्रिकेट मैच. नो, वी हैव टू ट्रीट हिम फर्स्ट, वी हैव टू स्टेबलाइज हिम फर्स्ट, then of course he can gradually start the exercise. But a normal school going child who has mild anemia, moderate anemia, they can absolutely exercise, no two ways about it. Okay, so you talked about how you can treat on allopathic standpoint, on a medication standpoint, right? Is there a way that we can naturally also work on it? You talked about a balanced diet. Yeah. Is there any other natural way wherein you can work on your iron absorption, or where you can ensure कि आप anemic अगर हो तो वो चला जाए? You know, the thing is, we are looking at a definitive treatment. हमें उसका iron level 2 या 3 महीने में बढ़ाना है. The best option for us is to give iron supplements, the allopathic iron supplements, syrups or tablets available. आप दूसरे पैथीज ट्राई करेंगे भी, there is no scientific evidence for those कि ये खिलाने से, ये herbs खिलाने से, या ये I don't want to mention any pathy here, but
दूसरी No, I पैथीज meant हैं. more of a lifestyle change. Lifestyle change, he's already mentioned that you need to have a good nutrition, right? And you need to stop eating foods that do not give you that much nutrition. Now, इसे भी हमें बैलेंस करना पड़ता है. किसी बच्चों को आप बोलोगे नहीं पिज़्ज़ा और बर्गर बिल्कुल नहीं खाना है तो वो नहीं मानने वाला है. Agreed. So once in a while, let them enjoy their meal, but it's good to have home cooked, nutritious meals, balanced meals like he mentioned, to ensure that उनका hemoglobin level बना रहे after you brought it to a certain level. And I think the best bet to treat anemia is your iron supplements that are available. They raise hemoglobin levels very quickly. 3 महीने में आपका normal हो जाता है. You build your body stores and then you maintain it with a balanced diet. बट उसके बिना आप चाहोगे कि सिर्फ हम न्यूट्रिशन लें और अपना लाइफ स्टाइल चेंज करके अपना अनीमिया ठीक कर लें, इफ़ यू आर ऑलरेडी सफरिंग लो आयरन लेवल्स, तो वो ज़रा मुश्किल काम हो जाएगा. But is it something that is genetic? Is that something that is probably linked to your entire lineage also? Or is it more dependent on your environment? When we are talking of nutritional anemia, it is your environment, your lifestyle. Okay, it's an individual based condition. कि इनको न्यूट्रिशन अच्छा नहीं मिला है या इनमें कोई आयरन लॉस हो रहा है, एंड दैट इज़ वाई इज अनीमिक. Genetic, let's not go into that because there are conditions where it may run into families. They are beyond the scope of this discussion. We won't get into that. But जो nutritional anemia है वो environmental है. आप nutrition improve करते हैं बचपन से ही तो अनीमिया होने के चांसेस कम हैं, और इसके बावजूद अनीमिया हो जाता है तो आप उसको आसानी से, जैसे इन्होंने बताया, टैबलेट्स और सिरप से ट्रीट कर सकते हैं. इफ़ यू लाइक यू मेंशन्ड अर्लियर कि it's not recognized or let's say ignored condition, if you let it go on without treatment, then you can come to a situation where he mentioned the anecdote of hemoglobin falling to 3. So we see very frequently hemoglobins of 6 or 7. तो हम उनको ट्रीट करते हैं, बट समटाइम्स इट फॉल्स टू बिलो 5 और तभी हमें उन्हें हॉस्पिटलाइज करके हीमोग्लोबिन रेस करने के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने पड़ते हैं. वी शुड नेवर अलाउ आवर चिल्ड्रन टू रीच दैट स्टेट. यू नीड टू पिक इट अप अर्लियर, यू नीड टू स्टार्ट treatment earlier, you need to counsel the parents about diet and nutrition, take care of infections, and so that you can, with oral medication, build up a child's immunity. So we've been talking about anemia, and if it is not treated in the right way, what are some of the long-term effects that can happen in children and when they grow up? Yes, I think earlier on we mentioned that in anemia, the oxygen carrying capacity of the blood is compromised. So if you do not get enough oxygen to parts of your body, they don't develop well. So these children can be growth stunted. जो उनकी normal potential है height का या weight का, वो achieve नहीं होगा. Second, the less oxygen in the brain also affects the development of the brain. So जो आपका normal potential है, आपके जो normal milestones बच्चे attain करते हैं, इस उम्र पे बोलने लगते हैं, इस उम्र पे चलने लगते हैं, इस उम्र पे खेलने लगते हैं, social interaction होता है, that gets muted, that gets affected. Okay, so in 0 to 2 years जो toddler है, वो द पेरेंट्स में नोटिस के इतनी मस्ती नहीं करता है जितना बाकी बच्चे कर रहे हैं, या इतना घुल मिलता नहीं है, और रोता रहता है, इज इरिटेबल, यू नो, सो ही डजंट form good relationships with members of the family or older siblings and so on. So this child his brain could be affected because of the anemia that is suffering. So it's very important कि इस stage पर उसका anemia diagnose होके उसे iron supplements दिया जाए, because some of the effects of iron deficiency become irreversible. जो उसका brain इस age में develop नहीं होता है 0 to 2 या 3 years तक, उससे जो अभी development नहीं है उसे आप बाद में iron देके develop नहीं कर सकते हो. Okay, because your brain reaches its final number of neurons at a certain age. So this is a critical time, the 0 to 2 years. तो उस समय में आप एक अनीमिया डायग्नोस करके और सप्लीमेंटेशन इंटरवेंशन नहीं करोगे तो वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हो जाते हैं, विच आर वेरी अनडिजायरेबल. वी आर लुकिंग एट गुड सिटीजन्स फॉर द कंट्री, वी आर लुकिंग एट प्रोडक्टिव इंटेलिजेंट पीपल, पर अगर आप अनीमिया नहीं ठीक करोगे तो वी आर नॉट गोइंग टू हैव प्रोडक्टिव एंड इंटेलिजेंट सिटीजन्स. सेकेंड चीज़, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन का भी हमने डिस्कशन किया था, उसमें मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं आजकल उनका स्कूल बहुत जल्दी स्टार्ट होता है. लॉट ऑफ देम हैव टू बी इन स्कूल एट 7 फॉर देयर मॉर्निंग असेंबली. सो व्हेन दे गेट अप एट 6:30, बिकॉज अर्लियर देन दैट यू कांट वेक अप, बट उतने आधे घंटे में दे नीड टू टेक अ बाथ, दे नीड टू ड्रेस अप, दे नीड टू गो टू द वॉशरूम एंड दे नीड टू हैव ब्रेकफास्ट. सो द वन थिंग दैट गेट्स मिस्ड इज ब्रेकफास्ट. इतनी जल्दी वो बच्चा खाना नहीं चाहता है, ना दूध पीना चाहता है. So they go to their schools hungry, okay,
एंड वो टिफ़िन में थोड़ा सा उनके लिए पैक कर दिया जाता है ना. मोस्ट स्कूल से कि इन्हें नॉर्मल डाइट और रोटी सब्जी वगैरह नहीं दो, गिव देम सम स्नैक्स सो दे डोंट स्पिल ऑन द बेंच और सो ऑन. तो वो बच्चे धीरे धीरे खाते हैं, दे गेट अ 5 minutes और 10 minutes रिसेस पीरियड, उसमें वो खाना नहीं खा पाते हैं, एंड द टिफ़िन कम्स राइट बैक होम एंड देन दे हैव लंच और वट एवर. उसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, सो न्यूट्रिशनल इंटेक कम रहता है. सो these children, school going children, are very likely to suffer anemia. And even when a doctor tries to supplement, हम सिरप या टैबलेट्स लिखते हैं, तो बिकॉज उनका स्कूल टाइम इतना लंबा है, हम चाह रहे हैं कि उनको दिन में 2 बार दिया जाए, तो वो एक ही बार जाता है. So you're even treating them, you're giving them half the treatment. So awareness is needed not only in the doctors how to manage this, but also in the parents कि भाई हमें इस सिचुएशन में अपने स्कूल की टाइमिंग्स को फैक्टर इन करते हुए how do we ensure that our child gets good nourishment and how do we plan the meals कि क्या चीज़ वो जल्दी खा भी लेगा, जो न्यूट्रिशन भी देगा. How do we make a breakfast that is small which a child can eat and wake up the child maybe 10 minutes earlier than what they normally wake up. So they have थोड़ा सा टाइम मिलता है कि थोड़ा सा उनको नाश्ता दे दिया जाए. So they are active in school, okay? और जब स्कूल से आते हैं, you should be ready with a nutritious meal. अब आजकल प्रॉब्लम क्या हो रही है with nuclear families? A lot of mothers and fathers are both working, they're outside home. The child is probably in a creche or is being looked after by old grandparents who themselves are not able to do much for the child, or caretakers who are not aware of the child's needs. So a lot of our school-going children today are anemic because the environment is not conducive to their good nutrition, to their growth, to iron supplementation. So we need to take in. So this is not so much a medical problem, it's more a social problem, a familial social problem, as I would say. And so I hope that a lot of parents who are watching this will go back home, think about it, and see how they can modify, make little modifications in their routines, and ensure that the child is getting what he needs to get, in addition to attention. I think these are the small things that can add a lot of value. Yeah. And thank you so much, Dr. Sailesh Gupta, Dr. Roshan Shah. That was a wonderful session. But if we have to end the session today, what would be the key takeaways that probably will help the people, the viewers, in ensuring that we can control or prevent the situation of IDA? Correct. So I think we have mentioned and covered, I think, almost all aspects of iron deficiency anemia today. Symptoms are covered. So just be aware. That would be my advice to all the parents. Because if you are aware, you can take an action against it. If you're not aware, you're not going to do. Other thing is seek professional help from the right doctors at the right time, and don't wait too much for because अरे ये तो हो जाएगा. Okay, when you have anemia, you treat it. Doctors' work is to treat it. हम हमेशा बोलते हैं कि हमारा काम है एम्यूनिशन सप्लाई करना, जाके बंदूक बच्चे को चलानी है. हम लोग सिर्फ गोलियां दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ लिटरली वी आर गिविंग मेडिसिन्स. बाकी बच्चे की बॉडी ने करना है. बट इफ यू डोंट डू दैट, देन वी विल नॉट बी एबल टू हेल्प एंड दे विल नॉट बी एबल टू हेल्प देमसेल्व्स. Other part is nutrition. Well balanced diet, sir has covered in detail about a nutritious diet and the importance of it. Other is deworming. That is the most important takeaway message that I would like parents to take home. Every 6 months, you must deworm your child. If we are to become an anemia mukt Bharat, we need to do that. That would be my message to the parents. Thank you so much, sir. Sir, would you like to say a few words on summarize the topic? What seems important to me, in addition to what Dr. Rushak has said, is that he said earlier that parents expect immediate results. That doesn't happen with anemia. हम जब treat करते हैं तो you need to give iron supplements for a period of 3 to 4 or even 6 months depending on the level of anemia. So every month the level rises by 1 gram%. So किसी का 7 है तो 1 महीने में वो 8 ही होगा और हमें पहुंचाना है 14 तक. Which means that we need to give iron for maybe 6 or 7 months. अब parents भी थोड़ा तंग आ जाते हैं, छोड़ देते हैं देना, बच्चे भी पीना नहीं चाहते हैं. So what's important here is that, like he said, you need to revisit the medical professional so that we can reinforce and counsel the parents, you need to do this. आपको वो देते रहना if you want your child hemoglobin to be at an optimal level. बाकी nutrition का मैं आपको बता चुका हूँ. Once again I would reiterate कि you need to intervene early in a child's life.
0 to 2 years का period और an extended to 5 years period is very important कि आप लाइफ में बच्चे की लाइफ में ऐसी चेंजेस पॉजिटिव ला सकते हैं जो which will help him for the rest of his life. So if you miss that period, then you are at a disadvantage. You've put your child at a disadvantage for the rest of his life. So as he mentioned, awareness. The parents need to be aware of how their child is developing. Be more intelligent about how to bring up children, right? So they need to do it more intelligently, not in a casual way. हाँ बच्चा है अभी खाना खिलाना है पालना है. You need to do extra. You need to put in some extra effort. Use extra resources. Use your intelligence a little more, and so that you ensure that our coming generations are healthy and productive and good citizens of the country. I think that's a very kind and good message that is there for the viewers. Thank you so much, Dr. Shah, Dr. Gupta. Thank you so much for joining us in this iron-packed episode. If your little superstars are having any symptoms of iron deficiency anemia, then take the PINK assessment at pinkofhealth.co to understand if they are at any risk. And do reach out to medical professionals for help. So that was Sehat Pe Charcha by Cipla. Thank you so much and see you in the next episode.